वो वाज लाइक 200 kgs से वो कम नहीं करेगा। तो उस टाइम पे इस चीज को भी लेके बहुत ज्यादा हम लोग स्ट्रेस हो गए थे कि अब इतना ज्यादा हम लोग कैसे करें। हाय। So in our previous video, we shared our brand's name. We revealed our brand's name to you guys, and we also shared our brand's vision, mission, and target audience and the key pillars. But now in this video, we are going to tell you guys what we were up to in the month of January, where we actually started building our brand's identity, like the visual identity, and you guys would be able to see it right now because I'm going to attach the deck. That was the second deck that we got from our branding team. So in this, it basically comprises of color palettes and the mood boards, or like the type of style that resonates with your brand's visual identity. मतलब कि जब आपके पास कोई फिजिकली प्रोडक्ट आता है तो उसके वो आपको कैसा अपील करना चाहिए, कि वो आपको कैसे कलर्स होने चाहिए, कलर पैलेट, टोन्स, फॉन्ट्स, मतलब all these things go behind the visual identity of the brand, which took place in the month of January for us. So and उसके बाद like you know उसमें different patterns होते हैं कि हमें एकदम subtle सा चाहिए, like minimalist look चाहिए, या फिर तड़कता भड़कता चाहिए, थोड़ा सा flashy सा. So what we decided was कि हमें a combination of both चाहिए. Yeah, like a little minimalistic, but at the same time having the Gen Z-ish appeal, like थोड़ा सा color and थोड़ा सा poppy-ish look उसका चाहिए. Right. Which you would see in the future videos what how the packaging actually turned out. Yeah. And also इस महीने के अंदर हम लोग figure out कर रहे थे कि form factor of packaging क्या होएगा, like if you want to do a box, or if you want to do a pouch, a master pouch, या फिर if you want to do like a tube kind of a style, or which will carry the main product. So a lot of things were going on. So we knew कि sachet style में हम कर रहे हैं हमारा जो product है, so it's going to be like 6 grams per sachet. But then जो उसका secondary packaging होएगी कि वो box के अंदर जाएगा या फिर वो एक pouch के अंदर जाएगा, that's a very important part to decide before your package designing starts. Because आपकी जो design team है वो उसके according ही designing start करेगी. Because pouch की designing completely different होएगी, box की designing बिल्कुल different होएगी. And also दोनों चीजों के case के अंदर minimum order quantity of where you are getting the product packaging from also depends, because जो printed boxes होते हैं उनकी MOQ भी बड़ा होता है और उनकी costing भी ज़्यादा होती है. Given we are a startup right now, we have to be mindful of where and how we are actually spending. So उसके ही इन सब चीज़ों के according हमारे जो requirements थी उसके according we started looking for vendors. हमने उनसे samples मंगाए कि like you know उनके पास कौन-कौन से packaging styles के samples हैं, तो उन्होंने हमें भेजे अपने पूरे sample packs भेजे जिसमें कि different sizing, different prints, different material, because material भी हमारे लिए बहुत important था कि हम क्या करना चाहते हैं. Yeah, मतलब कि for us एक something that we have come across is like कि lot of sachet उनकी tearability जो होती है ना, that is like a major problem. You have to stick it in your mouth and then tear it, because so many times and I'm pretty sure even you guys must have faced कि आप कोई भी चीज फाड़ने लगे और वो फट नहीं रहा, बीच में फंस रहा है. Yeah. Like 80% of the times वो फंसता ही फंसता है. So उस वजह से the kind of quality and paper and everything that goes to create that kind of thickness. GSM is the word. So that was very important for us. Yeah, and also another sort of challenge we faced कि हमारा जो manufacturer of the product जिसके पास हमारी formulation है वो कह रहा है कि मिनिमम ऑर्डर उसकी भी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जिसको MOQ बोलते हैं वो वाज लाइक 200 kgs से वो कम नहीं करेगा. तो उस टाइम पे इस चीज को भी लेके बहुत ज्यादा हम लोग स्ट्रेस हो गए थे कि अब इतना ज्यादा हम लोग कैसे करें, बिकॉज अगेन एज अ स्टार्टअप वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ MOQs as well कि हम लोग बहुत ज्यादा बड़ी बल्क क्वांटिटीज में नहीं हम लोग स्टार्ट कर सकते. Of course, once it starts selling and हमें हमारे पास फीडबैक्स आने स्टार्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग, अब अगर मैं 10,000 पीस लेके बैठ जाऊंगी और आफ्टर सेलिंग 1,000 और 2,000 आई गेट फीडबैक कि इसमें ये चेंजेस करने हैं या ये चेंजेस करने हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ट्वीक्स करने पड़ेंगे. एग्जैक्टली, एंड देन आई एम लेफ्ट विद a lot of my product which is not selling. Yeah. तो इसलिए MOQ हमारे लिए बहुत important
point था उस चीज Exactly. पे. Yeah. And, And we finally got our domain name. So log on Yeah. to drnksalts, drinksalts.com, and jump on our waitlist ASAP because we are launching very soon. It is May 27th right now. By the end of next week, we would be reaching out to everyone who is on our waitlist right now. So jump onto it and grab our product and give us feedback because we are so eager to hear your feedback and for you guys to Right. try it. Right. So this was January for us, and we will see See you you in in February. February. Bye.